Good morning, students. As we are going through the chapter Rise of Nationalism in Europe, in first and video we have discussed about the features of modern state, what is the nation states, right? Today we will discuss about the French Revolution, its role in rise of nationalism in Europe. So, as you read in class 9th that French Revolution was a very important turning point in the history of world. The French Revolution give the idea of equality, freedom, liberty to all over the world. This French Revolution that was started in 1789 and run to 1799. This French Revolution played an important role in the forming of modern Europe. There were so many changes came in French during the French Revolution. As you know very well that France in starting from 15th century was a monarchy state ruled by the monarch. In 1789 when the Louis XVI was ruling in the France, at that time the people started to protest and a revolution was held that changed the future of the France. What were the main changes came in this period? First of all, the ruling power from monarchy convert to French people. The new government were elected by the active citizens, right? Second, the ideas like la patrie means fatherland and libre citoyen means the citizen were adopted. Before this, the monsieur and madame systems were running, and by revolution now all the citizens were known as the citizen and citizen. Third thing, the royal flag. That you know very well, France was ruled by the Bourbon dynasty, but by the revolution, the royal flag were replaced by new French tricolor flag. तो फ्रांस का जो रॉयल फ्लैग था उसकी जगह पे एक नया ट्राई-कलर फ्लैग वहाँ पे अडॉप्ट किया गया. एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस दैट वाज नोन एज द इन स्टार्टिंग जनरल स्टेट्स जनरल. नाउ इट गॉट ए न्यू नेम द नेशनल असेंबली. दिस स्टेट्स जनरल now became the National Assembly. So these are the changes came in France during the French Revolution. Here you can see the map of France, right? Now come to the next. अब हम बात करें after the 1799 the France again changed from ये एक्टिव सिटीजन्स गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके बाद फिर वहाँ पे जो है डायरेक्टरी रूल इंट्रोड्यूस किया गया. और उन सब के बाद 1799 तक आते आते फ्रांस में दोबारा जो है एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हुई. द नेपोलियन बोनापार्ट इस्टेब्लिश ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन फ्रांस. It is right that Napoleon destroyed the democratic system or democratic ideas in the France, but the administration work of Napoleon became a turning point for whole Europe. उसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए, जो उसने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, उन सारे रूल्स बहुत ही टर्निंग पॉइंट थे फ्रांस के लिए भी और पूरे यूरोप के लिए भी. In 1804, Napoleon passed a series of reform, and this is known as the Napoleonic Code. It is also known as the Civil Code of 1804. In this Civil Code of 1804, Napoleon issues so many policies and programs for the welfare of the France and Europe. Among them, the most important and the first, establishment of equality before the law. According to the Napoleon, now all the citizens of the country will be equal in front of law. सबके लिए एक ही तरह का कानून रहेगा. Second,
ही एबोलाइज्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जैसा कि आप जानते हैं, आपने 9th में पढ़ा, फ्रांस में प्रिविलेज सिस्टम रन कर रहा था, जो वहाँ के नॉबिलिटी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के पीपल्स थे, उन सबको कुछ प्रिविलेज बाय बर्थ मिलते थे। नेपोलियन एबोलाइज्ड ऑल द प्रिविलेज सिस्टम। थर्ड, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एम्पायर को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह से डिवाइड किया जाएगा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होगा, उसको उसने सिंप्लीफाई किया और काफ़ी इफेक्टिव बनाया। नेक्स्ट, he granted the right to property to French citizen. He also introduced the right to property system. Before this, the right to property were opposed and protested by the liberal and nationalist people. But Napoleon introduced the right to property. He abolished the feudal system and freed the peasants from serfdom. जो भी फार्मर्स थे, जो नोबल पीपल्स के लोन या सर्फडम के साथ बंधे हुए थे, जिनके ऊपर कर्ज था, उसने उसको माफ कर दिया। तो दीज आर द नेपोलियन के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस, और जिसके हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। एंड ही आल्सो एलिमिनेटेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड्स इन टाउन। इससे पहले क्या था, in towns the new merchants and new traders cannot enter because there was a strict control of the guild organization. So to provide the facility to the traders and the businessmen, the Napoleon eliminated the restriction on guilds. Then he also made the effort to improve the transport and the communication, because at that time transport and communication system were not well. So the Napoleon worked for improvement the transport and communication system, standardized weights and measures. It means at that time in Europe the different measures and weights were running in different parts of the country. कई तरह की हर स्टेट्स की अपना अलग सिस्टम वेट और मेजर्स का। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट। ये मेजरमेंट हर जगह पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो किया जाता है। बट एट दैट टाइम, उस समय क्या था, मान लीजिए अगर एक स्टेट्स में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, देन इन अनदर इट कैन बी द 80 or 90. So it creates the problem for transportation, for businessmen, all the peoples. And the weight system, as we know, 1 kg is equal to 1000 gram. But उस समय ऐसा नहीं था, हर स्टेट्स अपने अपने तरीके से उन्होंने अपना अपना मानक बना रखा था, जिससे बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, उसने सारे जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में थी, नॉट ओनली फ्रांस बट आफ्टर विनिंग द अदर टेरिटरीज, ही मेक द सेम टाइप ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स इन ऑल द टेरिटरीज ऑफ नेपोलियन। इंट्रोड्यूस कॉमन करेंसी इन होल टेरिटरी। इससे पहले जैसे वेट और मेजर्स अलग अलग थे, इसी प्रकार अलग अलग स्टेट्स की करेंसी भी अलग अलग थी, जिससे बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को जो अपना गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करते थे एक स्थान से दूसरे स्टेट में, दे हैड टू फेस द मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज द करेंसी इज डिफरेंट। So to solve this problem, Napoleon also introduced the common currency system. The number of currencies that were running more than 30 came to the 2. जहाँ 30 तरह की करेंसी रन कर रही थी पूरे टेरिटरीज में, उसको उसने घटा करके केवल 2 तक रखा। तो ये भी उसके एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। बट नॉट ओनली द नेपोलियन रूल प्रोवाइड द एवरीथिंग, decisions are good and help for the welfare of people. When the Napoleon came, with the Napoleon, with all reform, censorship, taxation also came. Means the people have no freedom of press. इस तरह से इसीलिए उसको जो है मिलिट्री डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि सुधार तो उसने किया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मेंटेन किया, इफेक्टिव बनाया, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स के लिए कई तरह की जो है फाउंडेशन भी थी, जिसकी वजह से जो है वो एज ए मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में जाना जाता है। बट ऑल दीज वर्क्स ऑफ नेपोलियन प्रोवाइड ए वे फॉर द यूनाइट टू द पीपल। चाहे वो कॉमन करेंसी की बात हो, चाहे वो कॉमन मेजर एंड वेट्स का सिस्टम हो, या कॉमन लैंग्वेज हो, इन सारी चीज़ों से जो अलग अलग ग्रुप थे, वो सारे ग्रुप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ
कॉमन होते जा रहे थे, एंड दिस improve the feeling of nationalism among the mind of citizens of France and his Napoleon territories. So this is assignment based on today's video. Which new name was given to the States General? States General को नया नाम क्या दिया गया? National Assembly. In which year the Napoleonic Code was introduced? And what changes were introduced after the French Revolution? French Revolution के दौरान फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए वो आपको लिखने हैं. एंड लास्ट, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, मींस नेपोलियनिक कोड में कौन कौन से रिफॉर्म, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.